Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastav. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question. So let's start. First question: who is the protagonist in Samuel Butler, The Way of All Flesh? Okay, first है friend Beckett, second है Ernest, third है friend Flabby, and fourth है Diego. Okay, so who is the protagonist in Samuel Butler, The Way of All Flesh is the Ernest Hemingway. Right answer is B. Next question है friend, at the dawn of modernism, the contrast between generations and attitudes has been potently portrayed in You Can Never Tell Of. ए है फ्रेंड गाल्सवर्दी, बी है जी.बी. शॉ, सी है इब्सन एंड डी है सिंक्लेयर. राइट आंसर इज बी, जी.बी. शॉ. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज नॉवेल रॉबर्ट इस्लमेर अपीयर्ड इन 1888 एंड सोल्ड अबाउट 14,000 in its first year of publication in England and about 10,000 in America. ए है मैरी वॉर्ड, बी है सैमुअल बटलर, सी है W.H. वाइट एंड डी है मिसेस गैस्केल. राइट आंसर इज ए, मैरी वॉर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ बेटर नोन एज मार्क रदरफोर्ड फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मार्क रदरफोर्ड. ओके, मार्क रदरफोर्ड इज द ए है वाल्टर पैटर, बी है जिप्सन, सी है W.H. वाइट एंड डी है कॉनन डॉयल. तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा W.H. वाइट. ओके, स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा विच प्रोवोक्ड widespread public debate due to his supported advocacy of aesthetic hedonism was written by. A है W.H. वाइट, B है मूर, C है वाल्टर पैटर एंड D है हार्डी. राइट आंसर इज C फ्रेंड, वाल्टर पैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हुज sprawling poetic drama the dynasties, the delusions and ambitions of humankind are washed over by choice forces who from their extended perspective undercut any assumption of heroic action. A है J.M. Sims, B है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, C है W.B. येट्स एंड D है थॉमस हार्डी. राइट आंसर है D, थॉमस हार्डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें हिंट टू वुड इज प्रेजेंटेड एज समहाउ एक्सप्रेसिव ऑफ द अनफुलफिल्ड इंटेंशन विच मार्क लाइफ what it is in हार्डी. ए है फ्रेंड रिटर्न ऑफ द नेटिव, B है द वुडलैंडर्स, C है जूड द ऑब्सक्योर एंड D है टेस्ट ऑफ द यूएलआ. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो B हो जाएगा, द वुडलैंडर्स. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, इन which one of Hardy novels as Bella Dunn, the central female character, is presented as both crude and exploitative unlike his other heroines. A. The Return of the Native, B है Two on a Tower, C है Jude the Obscure and D है The Woodlander. Right answer is C, Jude the Obscure. Next question, the writer who under the French influence started a series of attack on literary censorship, especially movies in the ending records of the Victorian period is. Okay, तो Victorian period A है इसमें वाल्टर पैटर, B है जॉर्ज मोर, C है J.M. सिम्स एंड D है G.B. शॉ. राइट आंसर इज B हो जाएगा, जॉर्ज मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट memorable and popular work written in his autobiographical comedy is The Hell and Farewell. Right answer is A. Next question, the narrator in the private papers of Henry Raycroft announces, I am no friend to the pupil as a force by which the tender of the time is conditioned. They inspire me with distrust with fear as a visual multitude. They make me shrink aloft and often move to abhorrence. Who is the author of this novel is the George Moore. Okay, next question, Sherlock Holmes was introduced to the reading public in 1887 by Sir Arthur Conan Doyle. तो A है फ्रेंड the lost world, B है मिका क्लैर्क. ओके, B है इसमें मिका क्लैर्क, C है फ्रेंड इसमें C है स्टडी इन दी स्कारलेट एंड D है दी एक्सपोर्ट ऑफ दी ब्रिगेडियर जिरार्ड. राइट आंसर इज C, और स्टडी इन स्कारलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राकुला और मास्टरपीस ऑफ दी हॉरिफिलेशंस इज रिटन बाय. A है कॉनन डॉयल, B है स्टीवेंसन, C है ब्राम स्टोकर एंड D है J.M. बैरियर. राइट आंसर इज C, ब्राम स्टोकर. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, R.L. स्टीवेंसन किडनैप्ड एंड इट्स सीक्वल
है कैटरीना आर सेट इन 18th सेंचुरी. ए है इंग्लैंड, बी है आयरलैंड, सी है इटली एंड डी है स्कॉटलैंड. राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, स्कॉटलैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ किम was born in Bombay and in most of his writing presented a uh, Kaleidoscopic view of India. Name the author is Rudyard Kipling. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पॉलिश seafarer who often wrote stories and in many of his work presented colonialism as both brutal and brutalizing is. ए है R.L. स्टीवेंसन, बी है रोडियार्ड किपलिंग, सी है जोसेफ कन्नड, डी है ऑसर वाइल्ड. राइट आंसर इज सी, जोसेफ कन्नड. ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्क्विस्ट ऑफ द अर्थ विच मोस्टली मीन्स टेकिंग इट अवे फ्रॉम दोज हु हैव अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन और स्लाइटली फ्लैटर नोजेस देन आवर सेल्फ इज नॉट प्रेटी थिंग्स व्हेन यू लुक एट इट too much. This is an extract from Karnad is the secret agent under western eyes and outpost of progress, heart of darkness. Right answer is D हो जाएगा, heart of darkness. Next question, one of the most influential of Oscar Wilde plays a tragedy was written in French and was translated into English in 1894 by Lord Alfred Douglas. Name the play is the Salome. Okay, right answer is Salome. Right answer is B हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे the contemporary of Oscar Wilde. Okay, next question है the contemporary of Oscar Wilde who wrote such play as Tralianway of the Wells and the second Mrs. Tanqueray was G.B. Shaw. John Galsworthy, A.W. Pinro and H. Ibsen. Right answer is C, A.W. Pinro. Next question है friend, the admirer of Ibsen who wrote the essay The Quintessence of Ibsenism is G.B. Shaw. George Bernard Shaw. Right answer is first. Shaw early play which fell victim to Lord Chamberlain censorship include is the Philander and B है Mrs. Warren Profession. A and B is right answer. Okay, next question है who wrote a sequence of play concerned with the ancient hero Chuchulan beginning with O Bell. O Bell stand in 1903. It W. B. Yeats यानी विलियम बटलर येट्स. Who wrote Rider to the Sea, a short poetic play which suggests the perennial failure of those who work with and on the sea. तो ए है फ्रेंड R.L. स्टीवेंसन, बी है जोसेफ कन्नड, सी है J.M. सीन्स एंड डी है W. B. Yeats. राइट आंसर इज सी, J.M. सीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमोट मैरिगो coastline on which the play is set serves to confine an isolated rural community, one which is distributed by the arrival of a fugitive or supported parasite. Which play of J.M. Scenes are we referring to is the A है Rider to the Sea, B है the Thinker Wedding, C है the Well of the Saints and D है the Playboy of the Western World. राइट आंसर is D, the Playboy of the Western World. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज वर्क ऑफ J.M. Barrie. It moves from the Mayflower drawing room of Lord Loom to a desert Iceland where the sterling qualities of Loom Butler declared themselves. Name the play is Peter Pan, The Little Minister, The Admirable Crichton, Dear Brutus. Right answer is C, the Admirable Crichton. Right answer is C. Next question है friend, in which one of the barrier play the plot moves around the material disappreciations and reappreciations of its title character on a Harbiden Iceland is Mary Rose. Right answer is A, and his own affection for France and the French traditions. Okay, gave him as the Persian episodes in the old West tale suggest a usefully detached perspective on his own birthplace. Who are we talking of? A Arnold Bennett, B है H.G. Wells, C है G.B. Shaw, D है J.M. Barrie. Right answer is A, Arnold Bennett. Next question है the Saxon dealing. Okay, next question है the Saxon dealing with Sophia Scales, Paris Pensons and with the two sisters sojourn at
Bogton served to ratify the idea of the hotel as a no man land took of comfort, tidiness, and impersonality. Name the novel being referred to is the Old Wives' Tale. Okay, right answer is D. Which of the following fictional work of Bennett center on the limited ambitions and perceptions of a subburdened bookseller, his wife, and his burial literate service is the Ricey Man Steps. Right answer is B. आगे देखते हैं फ्रेंड द प्रोटागोनिस्ट टाइनिकल एक्सिल. ओके, द प्रोटागोनिस्ट टाइनिकल एक्सिल ऑन पैसिफिक आइसलैंड इज ऑल्सो अ पोस्ट Darwinist Frankenstein torturing and metamorphizing animals in his houses of pain only to be destroyed as his horrid creation revert to their the brutal type. Okay, in which novel of H.G. Wells does he appear is the Iceland of Dr. Moreau? Okay, in which novel of H.G. Wells the nation and the society are seen as ruled by the stupidity like the leaden goddess of the danceyard, like some fat proud flunkly, like pride, like indolence, like all that is darkening and heavy and heavy and obtrusive in life is the Kips. Right answer is B. आगे देखेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट है अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन इज प्रेजेंटेड इन मैरी ओलिवर अ लाइफ अ नॉवेल विच ट्रेसेस द एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस ऑफ ए मिडिल क्लास girl, the youngest child in a family of boy who is its author is May Sinclair. Okay, right answer is C हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. वेयर एंजल फियर टू ट्रेड द लॉन्गेस्ट जर्नी अ रूम विथ अ फ्यू और द फर्स्ट थ्री नॉवेल ऑफ द E.M. Forster. राइट आंसर is D. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड इन विच ऑफ द नॉवेल पब्लिश posthumously E.M. Forster proves contemporary taboos mainly homosexuality is the murice. राइट आंसर इज फ्रेंड बी हो जाएगा. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. इसमें फॉस्टर प्रेजेंट ग्रेट एंड ऑफन इम्प्लाइड. ओके, नरेटिव प्ले विद द नॉवेल टर्सेज एपिग्राफ ओनली करेक्ट इन द फॉरवर्ड इन. राइट आंसर इज ए. फॉस्टर मोस्ट ambitious and the persuasive novel A Passage to India was published in 1924 following a period in which he had acted as secretary and companion to of the Maharaja of Devas Senior. Right answer is B. Next question है friend. In which one of his novel Chesterton anti-centralist, anti-authoritarian, anti-theological prejudice serve to shape a utopian romance about an independent London ruled from an indistinguished inner suburb is the Napoleon of Notting Hill. Okay, the Napoleon of Notting Hill. Notting Hill. Right answer, sorry, Notting Hill हो जाएगा. Okay, right answer is B. Next question. Who wrote the Ballad of Reading Gaol after his term of the imprisonment with hard labor for 2 years is the Oscar Wilde. Okay, right answer is B हो जाएगा. Who elusive short story the first of which appeared in 1894 in one of the celebrated anthologies The Yellow Book dealt with defeated and the unequated love is the Charlotte Mew. Okay, right answer is C. Next question. Basics of place in England invariably associated with one of the dominant novels of the modern period. Name him. A friend H.G. Wells, B है D.S. Lawrence, C है Thomas Hardy and D है friend Oscar Wilde. So right answer is C हो जाएगा friend Thomas Hardy. Next question. Who wrote in his essay The Celtic 12th Night I have desired like every artist to create a little world out of the beautiful, pleasant and significant things of his marred and clumsy world is the W.B. Yeats. Right answer is B. Next question है friend कि volumes of poetry written by W.B. Yeats include is the Wild Swans at Cool, The Tower, The Winding Stair and other poems. Right answer is D, all of the above. Okay. Next question है friend. Which of its poem opens with the word between
extremity man runs his course is the vacillation. Right answer is C. Okay, it express his system of art and symbol in his highly superlative highly speculative essays. Okay, तो इसमें है the Celtic twelfth night, vision, the dawn on poetry. राइट आंसर इज बी और विजन. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु रोड द फेमस अमेरिकन प्ले द आइसमैन कॉमेट. ओके, तो आइसमैन कॉमेट इज रिटन बाई यूजिन ओनेल. ओके, यूजिन ओनेल फेमस राइटर हैं, अमेरिकन राइटर. ओके, राइट आंसर इज बी. और बॉब स्मिथ इज द सेंट्रल फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ ओनेल इज द हेरी ऐप. ओके, बॉब स्मिथ का जो फिगर है, सेंट्रल फिगर है, वो ओनेल नॉवेल का, तो वो है द हेरी ऐप. राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड. हाउ डज यॉर्क द सेंट्रल कैरेक्टर इन द हेरी ऐप डिफर फ्रॉम एरिस्टोटलियन ट्रेजिक हीरोज. ओके, तो एरिस्टोटलियन ट्रेजिक हीरो जो है, ही मीट्स अ सैड एंड विदाउट हैविंग एनी ट्रेजिक फ्लॉ. ओके, राइट आंसर इज बी. Who wrote the Lips of Grass, one of the classes of world poetry. Lips of Grass is written by जो लिखे हैं वो अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन का है. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम गिवन बिलो डू विटनेस वाइट विट्समैन अनहैबिटेटेड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स इज द चिल्ड्रेंस ऑफ ऑडेन. ओके, spontaneous me, a woman wait for me, all of the above is right answer. Right answer is D. Who wrote I fought a funeral in my brain. So my brain is the Emily Dickinson. Okay, Emily Dickinson क्या है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ब्लू बैरियर्स. राइट आंसर इज बी. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ द अब्राहम लिंकन. वो है ओ कैप्टन माई कैप्टन. ओके, राइट आंसर इज ए. और द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट द 84 डेज एडवेंचर ऑफ द सेंटिगो. ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा. आगे देखेंगे, स्टेनबेक नॉवेल गैप्स ऑफ वर्थ इज द स्टोरी ऑफ. ओके, गैप्सेस ऑफ वर्थ इज द स्टोरी ऑफ जॉर्ज फैमिली. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.